you feel that, yes, now I'm feeling relaxed and I'm ready to see what is in store for us today. All right. Beautiful women, beautiful energies of the goddess today. Let us explore what exactly are we? And where does our responsibility for our own health and care lie? And this is why Laiqa is here as India's first femtech company. It is completely dedicated to women's health, women's hormone health. And when we say women's health, why are we saying women's hormone health only? Why is it that this big word hormone, is so prevalent and is so important for our health? So this is where we want to discover. So before I jump into the next slide, I want to ask you all a question. At this current moment, if I give you a scale of 1 to 10, how would you rate your health status? From a scale of 1 to 10. What is your health status right now? Put it in the chat box. And I'll keep switching. मैं हिंदी भी बात करूंगी, इंग्लिश भी बात करूंगी. So please tell me, अगर आप हिंदी लैंग्वेज में आपको कंफर्ट है, इंग्लिश में ज्यादा कंफर्ट है या हिंदी में क्या है, बट आई विल कीप मिक्सिंग, दोनों मिला जुलू के हम लोग बात करेंगे, so that हम easily share कर पाए सब. It goes up in the morning and it dips by the evening. And similarly, and for both young and old men, it's the same. Just that, yes, for older men, हो सकता है level lower, लेकिन it's just a daily up and down, right? इसीलिए men have more arousal, they are more active in the morning part. Sometimes we don't feel that energetic in the morning, but men will be very, you know what I mean, right? So, but in females, our hormones are completely, first of all, there are so many hormones, right? We have estradiol, also called estrogen, the progesterone, the luteinizing hormone, the follicle stimulating hormone, you have oxytocin, you have so many other hormones which are working throughout the month. It's like a joint family है वहाँ पे, इतने सारे members रह रहे हैं और सबका अपना अपना एक role है. And throughout the month, like, during menstruation, generally the hormones are a little less. Estrogen is the highest, but the rest are dipped. उसके बाद धीरे धीरे follicular phase से start होता है. By the time you are in your mid-cycle, all your hormones are up. That is where you feel the maximum energy. किसको लगता है during your ovulation कि मतलब आज तो मैं झंडे गाड़ दूंगी और एकदम सब बढ़िया हो जाएगा. You feel good, you are more active, you're energetic, you're able to do things, you look beautiful, your skin is better, you're glowing, you have higher arousal. How many of you feel कि हाँ ये होते हैं changes? These are the things that you feel. Yeah, Ayushi, so true. Absolutely. हम लोग को लगता है कि ovulation के time पे तो हम ही बाहुबली हैं. मतलब we are. Oh yeah, Priya, it happens to all of us, trust me. So we all are sailing on a big boat, a big ship rather, right? And फिर वो luteal phase आता है, थोड़ा होने लगता है. See how the luteinizing hormone completely, goes down, and the progesterone goes up. So वो क्यों होता है? Because now, in case you have conceived, so the baby needs, the pregnancy needs a lot of progesterone. So वो high होता है. लेकिन अगर नहीं होता है conception, फिर मैं नीचे आ गया and you're back to the menstrual cycle. So we are going through, it's like waves in the ocean. पूरे हमारी तो जिंदगी में पूरे waves ही भरे होते हैं. And that's why we say hormones make us dance, make us dance. See, मैं video तो सबके देख नहीं पा रही हूँ, but I want you all to just move your body like you're also dancing along with your hormones. Depends on whatever stage of the cycle you are in right now, right? So, which is why it's very important कि हमें अगर अपने hormones को balance में रखना है, they have to be well balanced. So see, these dips and falls and the ups and downs that you see, they are normal. This is normal fluctuation. Problem तब होती है जब जैसे fluctuate होना चाहिए वो नहीं हो रहा है. जिसको high होना चाहिए वो low है, जिसको low होना चाहिए वो high है, all kind of things. That is when problems happen, which is why it's important that we have to keep our hormones in balance. And कैसे होगा? Because it's nature. वो हमारे को nature में मिला है.
So all the elements of nature come together to keep everything in balance. The air, through the breath, earth, through activity and grounding. Fire gives us energy, the sunlight energy and vitality. Water and food, which gives us enough hydration. And without water, we are 70% water in our body, right? So हमें अपना blood को रखना पड़ता है, it well in a good fluid state. And of course, a lot of free space and sleep, very important. So just imagine these are all the natural elements, the elements of nature which are so important to keep your hormones balanced. So how does now अब वो कैसे बैलेंस करें? जरूरी नहीं है कि हमेशा बैलेंस रहे, चीजें होती हैं ऊपर नीचे, कभी कभी अपने आप ठीक हो जाती है, because body has its own mechanism to heal. Our body is very powerful, it heals, it has self-healing property. But sometimes we need a little bit of extra help. And that is where Laiqa comes forward very gently, holding your hand and giving you the right direction कि कैसे ये हम सब balance करें अपने body में. So now coming to the next thing, tell me, of all these symptoms, starting from stress to 15 vaginal dryness, how many have you all experienced? So you can just write the number. Suppose I have experienced stress, acne, irregular painful periods, and difficulty sleeping. So I'm going to type 1, 2, 8, and 9. So I want all of you to go through these and just type in the chat box which numbers resonate with you. Come on, everyone. Ekdam fatafat. Awesome. Thanks, Ayushi. 1, 3, 7, 8, 9. Awesome. You can even have just one, or you can have all. There is, as I said, there's nothing right or wrong. There are no judgments passed here. We all are in that same big boat. Come on, everyone type. Excellent. 1, 4, 10, 12, 13, 1, 3, 8, 9. Wow. I know. I totally hear you. We all. We can see that Jaya has raised her hand. Jaya, would you like to say something? Do you want to talk to us? All right. Okay. So yeah, you can lower your hand then. Yeah, so 1, 3, and 12. Absolutely. So if this is all, these are the things that you are going through. Ab aage kaise badhe? How many of you want to reverse it? All except 5, 10, 14, 15. Absolutely, Rajni. We totally hear you. Okay. So now tell me, how many of you would not want these things to happen? Or agar ho bhi raha hai, theek hai, thoda bahut, fluctuate ho, lekin fir wapas, feeling good, feeling fine. How many of you want to take care of these symptoms and feel better going forward? How many of you? Come on, because your answers will also reflect a great thing that's going to happen going forward. A big surprise is awaiting all of you. How many of you want to just say yes? Me. Type in me if you want to lessen the severity of these symptoms. Yes, Uma, thank you so much. Diksha, me. Rajni, me. Yeah. Oh, yes, absolutely. Oh, lovely. And yes, good news is that these all are reversible. There is nothing that cannot be done. And this is why today we are going to go a little deeper into understanding कि पहले क्यों हो रहा है. हम लोग कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो पहले हम समझते हैं कि क्यों हो रहा है, फिर हम देखते हैं कि उसके क्या हम so what are the different things that we can do to remediate it. So I want to invite our expert today, Dr. Ruchi. Hi, Dr. Ruchi. Hello, Deepika. Hi. So Dr. Ruchi, she's an sorry, yes, you were saying something. I said thank you for having me here. Absolute pleasure. Dr. Ruchi, you have such a brilliant cache of experience, and I'm like just reading about her. This was just 4 lines about her, but she is such an experienced doctor amongst us. She is an Ayurvedic doctor with over 11 years of dedicated practice. She offers personalized treatments, and
they are based on our Ayurvedic principles. At the same time, with Laiqa, we make sure that our ancient wisdom, our Ayurvedic principles, and also modern science, everything is combined, and a very holistic approach is taken to help you all. So, Dr. Ruchi, I would like you to take over from here, and here you go. All right. Thank you, Deepika. I appreciate this fantastic introduction, and it's a pleasure to have this opportunity. And I am very excited to see how engaged our audience is today. It's going to be fun, and let's make most of our time together here. So going forward, we're going to talk about PCOS. सबने सुना है, सबको पता भी है. अगर मैं इसकी सिर्फ एक डेफिनेशन बोलूं तो इट्स लाइक पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है या डिजीज है. ऑल्दो इसके बारे में बात करने से पहले मैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी. जैसे कि दीपिका बता रही थी, वी गर्ल्स आर सो डिफरेंट. वी हैव दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हिच इज क्वाइट सिमिलर टू मून साइकिल, राइट? ये समझना बहुत जरूरी है. कई लोगों को पता है, कई लोग थोड़ा सा इसके बारे में क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली ये क्या है और इसको किस तरह से हम ठीक कर सकते हैं. तो अब अगर बात करें तो हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बेसिकली 4 स्टेजेस में डिवाइडेड होता है. मेंस्ट्रुएशन, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन फेज एंड ल्यूटियल फेज. अब देखिए, मेंस्ट्रुएशन तो हमें सबको पता है, जब हमारे पीरियड्स आते हैं तो उस जो ब्लीडिंग फेज होता है नॉर्मली 5 दिन का 7 दिन का अप्रोक्सीमेटली सब में होता है. तो ये मेंस्ट्रुएशन फेज है. उसके बाद फॉलिकुलर फेज स्टार्ट होता है जहां पे हमारे फॉलिकल्स बनने स्टार्ट होते हैं. एंड ग्रेजुअली ओव्यूलेशन होता है. ओव्यूलेशन इज द टाइम जब हमारा ओवरी से एग रिलीज होके ट्रैवल करता है, वेटिंग फॉर इट टू फर्टिलाइज. अगर फर्टिलाइज होता है तो प्रेगनेंसी होती है, नहीं तो ल्यूटियल फेज में वो दिस ल्यूटियल फेज इज अ टाइम जब एग वेट करके डिमिनिश हो जाता है. एंड एट द सेम टाइम थोड़े समय में हमारे हॉर्मोन्स अगेन वेट करके ग्रेजुअली मेंस्ट्रुअल साइकिल को रीच करते हैं, जबकि हमें ब्लीडिंग फिर से शुरू हो जाती है. नाउ इट इज अ बेसिक थिंग, पर इसको अंडरस्टैंड करने का मतलब ये है कि जिस तरह से दीपिका हमें बता रही थी कि कैसे हमारे हॉर्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं, इट्स अ कंप्लीट रोलर कोस्टर दैट वी हैव, राइट? सो ये रोलर कोस्टर हमें इन सारी फेजेस के थ्रू गुजरने हम गुजरते हैं, तब ये रोलर कोस्टर आता है. बट इट इज वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड कि आपका हर फेज अपने आप में एक अलग तरह का एक्सपीरियंस है. उसको हम उसके सिम्टम्स भी अलग अलग हैं. किसी में हम बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, किसी फेज में हम बहुत लो हैं. कभी कभी पीएमएस के दौरान हमें बहुत वियर्ड सिम्टम्स आते हैं. किसी को नोजिया होता है, किसी को एक्ने होता है, किसी को मूड स्विंग्स होते हैं. तो इन सब के हिसाब से अगर हम अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करें कि हमें किस चीज की जरूरत है, क्या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए, क्या बॉडी को सपोर्ट चाहिए, किस तरह का हम फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, क्या खाना हमें सूट करेगा, क्या नहीं, अगर हमने ये समझ लिया तो बेसिकली इट विल बी वेरी सिंपल कि इस रोलर कोस्टर में आगे बढ़ते हुए हम ये समझ पाएंगे कि इस चीज को कंट्रोल कैसे करके रखना है. एंड दैट इज व्हाट लाइका डज हियर. अब देखिए, ये बात तो हो गई हमारे हॉर्मोन्स की और हार्मोनल इम्बैलेंस को मैनेज करने की. बट बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं. अदर देन हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी बहुत सारे जेनेटिक फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कुछ हमारे हाथ में हैं. जैसे डाइट और लाइफस्टाइल हम अपने हाथ में वी कैन मैनेज दोस. हाउएवर देयर आर सम, जैसे अगर हम बात करें एयर पोल्यूशन की, केमिकल एक्सपोजर्स की, उनको हम अवॉइड नहीं कर सकते. Even everything that we use, the makeup, the hair products, the skin products, everything is filled with chemicals. इनको अवॉइड करना बहुत मुश्किल है. एंड अगेन द पुअर डाइटरी चॉइसेस जो एक्चुअली हमारे डाइट का पार्ट बन चुके हैं, हम सोचते हैं हम खा रहे हैं, बट एक्चुअली दे आर द रीजन विच आर कॉजिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, लाइक रिफाइंड कार्ब्स, शुगरी आइटम्स, a lot of preserved and packaged food जिसमें हमें नहीं पता किस तरह के कलर्स, किस तरह के केमिकल्स, क्या क्या आर्टिफिशियली डिराइव्ड प्रिजर्वेटिव्स यूज हो रहे हैं, हमें नहीं पता. So these are all the reasons which can cause PCOS.
और पीसीओडी, एंड इन सबको नॉर्मलाइज करना, हर चीज को अवॉइड करना हमारे हाथ में नहीं है. But what we can do, as it is called a lifestyle disorder, there are lifestyle changes that we can do to get, the solution of this problem. Can we go to the next slide, please? डॉक्टर रुचि, आई थिंक Yes. इसीलिए ना, लाइक हमने तो सुना ही नहीं है, लाइक हमारे नानी दादी लोगों को कहाँ होता था, लाइक प्रोबेबली द लाइफस्टाइल, द फूड चॉइसेस, they were so much simpler and very natural, isn't like, I'm that's the only reason I can think of that, we never our nani dadis never experienced PCOS, इतना नहीं. राइट, दो ही बातें बताऊंगी दीपिका. आप देखिए हमारी, इफ यू टॉक अबाउट दैट जनरेशन, वो कितना फिजिकल एक्टिविटी करते थे. आई वुड से वो एक्सरसाइज Yeah. नहीं करते थे, पर एवरीथिंग हैड सो मच फिजिकल रिक्वायरमेंट. इतना था कि उनका फिजिकल जो भी थी एनर्जी, वो उनकी यूटिलाइज हो जाती थी. सेकेंडली, एवरीथिंग वाज वेरी क्लीन, वेरी ऑर्गेनिक. इवन इफ आई से प्रेजर्वेटिव, अचार तब भी बनते थे, पर उसमें तेल या चीनी, Natural बेसिक, या preservatives, not chemical. जूस, Hmm. बहुत बेसिक चीजें एज अ प्रिजर्वेटिव यूज होती थी. और हम लोग मोस्टली फ्रेश ही खाते थे. रेफ्रिजरेटर्स Yeah. थे नहीं, प्रिजर्व कर नहीं सकते थे, तो मोस्टली हम फ्रेश खाना खाया करते थे. बहुत सारी चीजें हैं. आज की डेट में अगर हम That अच्छा is so खाना, true. या Yeah, अगर हम yeah. अच्छा खाना ढूंढने भी जाएं, तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप फ्रूट्स खाते हैं, यू यू डोंट नो विच ऑल फ्रूट्स आर आर्टिफिशियली प्रिजर्व्ड. एंड Right. कई बार तो Hmm. every season you're getting apples throughout the every month you have apples these days. You have early growing Correct. tree, I mean fruits, जो अपने टाइम से पहले ही फ्रूट्स ग्रो हो जाते हैं, कार्बाइड से पका दिए जाते हैं कई फ्रूट्स. there are a lot of things which are happening, and वो Hmm. सबको खाना, अब ग्रेप्स लेते हैं, they are full of pesticides. Yeah. राइट. अब आप खा तो रहे हैं, पर उसकी क्वालिटी क्या है वो हमें भी नहीं पता. तो इवन इफ वी आर मेकिंग Absolutely. चॉइसेस विलिंगली, वो चॉइसेस कितनी हेल्दी है वी आर नॉट श्योर. सो देयर सो मच दैट वी हैव टू डू टू मेंटेन दैट हेल्थ लेवल. नाउ दैट वी हैव टू Right. फोकस ऑन दिस. एंड यही एक्सपर्टीज है, जब हम छोटी छोटी चीजें समझ जाएंगे, यहाँ पे ही लाइका की Hmm. एक्सपर्टीज काम आएगी कि इन सब चीज को अंडरस्टैंड करने में और कैसे हम आपकी हेल्प कर सकते हैं. Yeah. सो वेट Jilly has करके अगर asked a हम, question. Jilly is हम्म, asking, my AMH level is 22. How to decrease? Jilly, AMH, by AMH you mean anti-Mullerian hormone? right, I That think one, that, right? Yeah. yeah. Yeah, that must be the one. So she has mentioned this. Okay. Okay, Jilly. Thanks. Dr. See, and Ruchi. yeah, anti-Mullerian hormone जो है, it signifies a lot of things. Specifically, अगर मैं बात करूँ, एक underlined statement कहूँ, तो वो ये होगी, फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन लेवल, या रिप्रोडक्टिव आपका कितना कैपेबिलिटी है, या आपकी हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, वो ये हार्मोन बताता है. एंड ऑफ कोर्स इसके कंट्रोल करने के देयर आर अ लॉट ऑफ वेज दैट कैन बी डन. बेसिकली राइट एएमएच को अटेन करने के लिए आपको बहुत अच्छा अपना डाइट एंड लाइफस्टाइल रखना पड़ेगा. स्ट्रेस एंड स्लीप पे ध्यान रखना पड़ेगा. एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आपको अपना बीएमआई इन कंट्रोल रखना पड़ेगा. वेट कम रहेगा तो एएमएच के लेवल सही हो जाएंगे. दिस इज वन थिंग. एंड ऑफ कोर्स जिली, वी कैन हैव अ personalized consultation where we can discuss all the details about your health, your reports, your AMH levels, and then we can talk forward about it. Okay. And going forward, we were talking about insulin resistance. Yeah. Insulin resistance एक बहुत I would say एज अ डॉक्टर भी मैं कहूँ बहुत सारे लोगों को ये बात क्लैरिटी नहीं होती है कि ये है क्या. इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब ये भी नहीं है कि आपको शुगर हो गया है, पर मैं ये भी नहीं कहूंगी कि आप ठीक हैं या हेल्दी हैं. आपका बॉडी जो है वो खाने को, या मैं ये कहूंगी कि जो आपकी बॉडी में एक सिंपल सी एनर्जी, जो भी हम खाते हैं वो हमारे सेल्स तक पहुंचता है, एनर्जी में कन्वर्ट होता है और उसको हम यूज करते हैं. यही एक बेसिक प्रोसेस था इनिशियली. अब वो हमारे बिगड़ी हुई डाइट और लाइफस्टाइल से हैम्पर हो जाता है. और यहाँ पे क्या होता है, इंसुलिन जो है वो हेल्प करता है आपके खाने के एंड प्रोडक्ट को सेल्स में पहुंचाने के लिए, ताकि वो ग्लूकोज या वो शुगर मॉलिक्यूल जा करके आपको एनर्जी दे.
बट क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस क्रिएट होने के कारण इंसुलिन आपके सेल्स तक वो शुगर नहीं पहुंचा पा रहा। तो अब क्या है, आपको एनर्जी नहीं मिल रही है, तो सेल्स एक मैसेज देते हैं ब्रेन को कि और खाना लाओ। आपको हंगर होती है, सटाइटी नहीं होती है। ग्रेरिन लेप्टिन जो दो हॉर्मोन्स है हमारी बॉडी में, जो खाने के लेवल्स डिसाइड करते हैं, लाइक सटाइटी का और भूख का, जो हमारी हंगर के जो स्पाइक्स है वो बढ़ जाते हैं। अब हम ज्यादा खा रहे हैं, हम कितना भी खा रहे हैं, हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से सेल्स को एनर्जी नहीं मिल रही है। अब एनर्जी नहीं मिल रही है, हम और खा रहे हैं, तो ये सारा ग्लूकोज फैट में स्टोर होता जा रहा है, हम मोटे होते जा रहे हैं। और ब्लड में, क्योंकि अब ब्लड से ग्लूकोज पिकअप नहीं हो रहा है, इंसुलिन उसको ले नहीं पा रहा है, तो ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज होने लग जाता है। दिस लीड्स टू अ लॉट ऑफ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, be it obesity, be it PCOS, be it borderline sugar condition, especially diabetic। अगर आपकी हिस्ट्री है फैमिली में डायबिटीज की, तो जो डायबिटीज की हिस्ट्री वाले लोग हैं उनको तो बहुत ज्यादा अवेयर होना पड़ेगा। दिस इज अ वेरी, आई मीन, राइट नाउ दिस इज अ कंडीशन, इंसुलिन रेजिस्टेंस इज अ कंडीशन जो कि अभी किसी डिजीज में कन्वर्ट नहीं हुआ है, बट it is the underlying cause of a lot of problems, liver related issues हो जाते हैं, fatty liver हो सकता है। So this is the main culprit here when we talk about any Uma disease. just message. Could you please repeat about sugar? It's sugar, not sugar resistance, insulin resistance. Uma, right? That's what you meant. So Right. उसको एक छोटा सा repetition चाहिए, like what हाँ हाँ, exactly is happening in बेसिक insulin बेसिक resistance. आपने खाना, अगर मैं अभी एक खाना खा रही हूँ कुछ भी, उसका जब ब्रेक डाउन होगा और मेरी बॉडी में वो ग्लूकोज की तौर पर ब्लड में सर्कुलेट होगा फॉर माई सेल्स टू यूज इट, उस टाइम पे क्या होगा, इंसुलिन मदद करता है। इंसुलिन के पास वो चाबी होती है जो सेल का दरवाजा खोले, वहां पे ग्लूकोज को भेज दे, ग्लूकोज जाके उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर, मतलब कन्वर्ट हो जाएगा सेल में जाके। अब क्या है, इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब इंसुलिन के पास वो चाबी खो गई है। अब वो ग्लूकोज आ तो रहा है, पर इंसुलिन के पास चाबी ना होने के कारण सेल का वो दरवाजा नहीं खुल रहा है, ग्लूकोज अंदर नहीं जा रहा है, एनर्जी नहीं बन रही है। एनर्जी नहीं बनती तो बेसिक बॉडी को लगता है कि अरे, हम कुछ डिप्रिवेशन है, हमें कुछ जरूरत है। तो जैसे भूख लगती है, प्यास लगती है, आप और खाते हो, खा तो रहे हो, ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ गया, मोटापा भी बढ़ गया, सब कुछ बॉडी में ज्यादा आ गया, पर वो यूज नहीं कर पा रहे हैं हम, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। अब Hmm. बिल्कुल बंद हो जाएगा तो वो शुगर डायबिटीज की कंडीशन हो जाएगी। रेजिस्टेंस का मतलब है ये होना शुरू हो गया है। अभी आप कुछ खा रहे हैं, कभी कन्वर्ट हो रहा है, कभी नहीं, धीरे धीरे वो इंसुलिन की चाबी या तो घिसती जा रही है या खो गई है। दिस इज द कंडीशन। Yeah. And Chetna is saying कि मेरा AMH is 0.26 low, indicate हो रहा है. What does it mean? My age is 24. Chetna, it completely depends on, as I said, there are a lot of factors। आपका एज जो है ऑफ कोर्स कम है, और उसके रीजंस क्या हो सकते हैं हम डिस्कस करेंगे। आपका हाइट, वेट, एज, आपकी फैमिली हिस्ट्री, आपका करंट लाइफस्टाइल क्या है, वो सब डिस्कस करके वी कैन टॉक अबाउट इट। एंड आई थिंक द बेस्ट वे वुड बी टू हैव अ पर्सनलाइज्ड सेशन। We can Hmm. always connect one on one and talk about it, right? So in fact यही you're going to everyone, this is for all our participants, ये आपको आगे पता चलेगा कि why हम independently आपके बॉडी के मैकेनिज्म या फंक्शन पे काम नहीं कर सकते हैं। एवरीथिंग इज वर्किंग टुगेदर, एज आई सेड ना, जॉइंट फैमिली है, ये याद रखो। फैमिली कैसे चल रही है भाई, कोई खाना बना रहा है, कोई कपड़े धो रहा है, सब कर रहे हैं, सब अलग अलग, लेकिन इट्स फाइनली फॉर दैट एंटायर हाउस होल्ड। सो अब जॉइंट फैमिली में कैसे चीजें होंगी, और इसीलिए अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है ना, हमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स देखने, हमें हर फैमिली मेंबर को चेक करना पड़ेगा कि मतलब कहाँ पे कौन किसकी हेल्थ कैसी है, कि हमारा हाउस होल्ड क्यों नहीं ठीक से चल पा रहा है, राइट? सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू कम टू इट। इनफैक्ट यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हाई एग्जैक्टली लाइका इज डूइंग दिस एट ऑल फॉर यू पीपल। सो यस, यू नो, हमने तो पूछने से पहले ही आपने पूछ लिया था, हमें ऐसी ऑडियंस चाहिए। आई लव द एनर्जी एंड द काइंड ऑफ I इंटरेक्शन know, दैट इज it's हैपनिंग। आई nice. नो, कीप आस्किंग क्वेश्चंस, आई विल कीप पिकिंग इट अप।
So yes, and this is one of main questions that many of our earlier participants have asked कि हम self diagnose कैसे करें. First of all, I want to also ask this audience, how many of you have had a diagnosis of PCOS? या तो डॉक्टर ने किया या आपको लगता है आपके आपको है PCOS. रजनी says I have fibroid. क्या वो भी रीजन है PCOD का? Rajni is asking, Dr. Ruchi. फाइब्रॉइड कहाँ है रजनी? Fibroid, is fibroid reason? हम्म. Rajni, you have uterine fibroids, if I can guess, that's what you meant. Okay, yes, uterine Okay, fibroids. Rajni, again, the same thing applies here. First thing is hormonal imbalance. Like हमारा क्या है, fibroids क्या है? Cellular growths हैं, unwanted cellular growths हैं, जो कि actually नहीं होनी चाहिए, पर वो हो गई हैं. तो yes, there are few things which are responsible for it. The basic one being hormones. एंड जब हार्मोनल साइकिल रेगुलेट नहीं होता है, हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं, तो ये कंडीशंस हो जाती हैं. दैट इज हाउ आपका, जैसे अगर फिब्रॉइड्स या मैं कहूँ सिस्ट यूट्रस में हो, ओवरीज में होंगे तो उनको पॉलिसिस्टिक ओवरीज बोल देंगे हम, या सिस्ट है ओवरी में ऐसा कहा जाता है. अदरवाइज यूट्रस में है तो ये भी फिब्रॉइड इज अनदर ग्रोथ विच कैन बी टेकन केयर ऑफ, डिपेंडिंग अगेन कितनी क्रॉनिक है, क्या साइज है, वो सब हमें एक बार आपकी रिपोर्ट्स देख करके we can go forward. And yes, a lot of people are also mentioning that they do have some cysts. One has facial hairs, irregular periods, lot of mood swings. अरे ये अभी सारी चीजें आने वाली हैं आपके पास, अभी full Right. bucket है आगे. Aanchal says, doctor said some cysts are present. It's an initial stage of PCOS. So how I can overcome? Actually, nowadays I have more craving of sweets. Absolutely, you will know very soon how you can overcome, Aanchal. मतलब we have a plan for you. तब वही तो surprise है. मतलब अभी मैं फटाक से surprise नहीं बताऊंगी, आने दे धीरे धीरे, right? Okay. So And let me clarify. yeah, Aparna has said ultrasound reports show cysts, facial hair, acne. Oh yes, bang on. These are the symptoms. Exactly. Okay, okay. Okay, Aparna, you've raised your hand. Is there something you want to tell us, or yeah, galti se raise hua hand? Okay, And the Rajni, message that you sent us, ultrasound reports, is that why you raised your hand, Aparna? okay. Yes, exactly. These are very telltale signs of PCOS, and in fact, आगे बढ़ के हम आपको दिखाएंगे like what are the different things. You'll surely have all your doubts cleared. And And Rajni Deepika, says, basically, I don't understand. Sorry, so we'll just take this one question. उसके बाद we'll get to the next slide before we run out of time. So Rajni says, basically, I don't understand मुझे PCOD है या PCOS. Okay, yes. okay. That's what I Very was saying. interesting Rajni has question. asked a very interesting question. A lot of people do not have clarity about it. So see, PCOS, as I've been saying, polycystic ovarian, it is a syndrome where a lot of signs and symptoms are showing, wherein PCOD is a state where all these signs and symptoms have existed in your body for a longer period of time, and it has come to be a disease now. दैट इज द ओनली बेसिक डिफरेंस. बट हाँ, जब आपके सिस्ट्स प्रॉपरली डेवलप हो चुके हैं ओवरीज में, ये कंडीशन आपको काफी क्रॉनिक हो गई है, दैट इज व्हेन यू कॉल इट अ डिजीज. इसके और इनिशियली क्या होता है, कई लोगों को, जैसे हम सारी बात कर रहे हैं, इरेगुलर पीरियड इज द फर्स्ट साइन एंड सिम्टम यू माइट हैव. फेशियल हेयर या बॉडी में बहुत सारी जगह पे जहाँ पे नॉर्मली फीमेल्स को हेयर नहीं होते हैं या एक्सेस हेयर ग्रोथ हो रहा है, मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ या मेल पैटर्न हेयर लॉस हो रहा है, वो एक साइन है. एक्ने, वेट गेन, एंड एज आई सेड थिनिंग ऑफ हेयर, ये सारे चीजें हैं जो आप खुद देख सकते हैं अपने बॉडी में. सिस्ट तो ऑफ कोर्स हम अपॉन अल्ट्रासाउंड या अपॉन डायग्नोसिस ही हमें पता चलेगा जब हम डायग्नोस्टिक टेस्ट कराएंगे. बट बाकी चीजें कैन बी, एंड ट्रस्ट मी, even if few people do not have irregular periods and have other signs and symptoms, even then there can be some underlying reasons or some signs of PCOS. तो आपको कोई भी, see, our bodies were meant for us to feel amazing in them. I mean, these are our, you know,
बॉडी हमारा घर है जिसमें हमें हमेशा हैप्पी और हेल्दी फील हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है ना, पीसीओएस नहीं कुछ भी, गेट योर सेल्फ, गो टू अ डॉक्टर, गेट योर सेल्फ टेस्टेड, डायग्नोज, एड्रेस। Please understand that we need to be healthy, we need to work on ourselves. Don't ever avoid these signs and symptoms that your body is telling you. या हम लोग बहुत जल्दी नॉर्मलाइज कर लेते हैं, अगर कुछ गड़बड़ होता है ना, अरे चलो हाँ, छोड़ो, स्पेशली पीरियड से रिलेटेड हमें लगता है अरे ये तो ठीक है, चलो नेक्स्ट मंथ ठीक हो जाएगा, अरे ये तो होता है। हम इतनी सारी चीजें हैंडल कर रहे होते हैं कि मतलब दिस बिकम्स लाइक द लास्ट ऑन अ प्रायोरिटी लिस्ट, एंड फिर ये ना पाइल अप होने लगता है। सो you're so right, एंड ऑफ कोर्स Deepika. दिस इज वन क्वेश्चन, लाइक मेडिकेशंस, लाइक आई थिंक मेनी मेनी ऑफ कोर्स कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि हमें मेडिकेशंस लेने पड़ते हैं, बट हाउ डू दे रियली वर्क ऑन द बॉडी, एंड इज इट इम्पोर्टेंट कि हमें मेडिकेशन लेना ही पड़ेगा फॉर रिवर्सल, एंड क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं डॉक्टर? Trust me, medicine, a lot of go to, जिसे कहते हैं ना, एक गो टू अप्रोच है कि आपको कोई भी ओसीपीज, जिसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कहेंगे हम, वो दे देते हैं, या कुछ मेटफॉर्मिन या कुछ वैसी चीजें देते हैं। अब टेक्निकली अगर देखा जाए तो फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम गायनेकोलॉजिस्ट ने दिया है, आपने लिया, क्योंकि वो एक्सटर्नल हार्मोन या ओरली आपको हॉर्मोन्स दे रहे हैं। बॉडी एडजस्ट करेगी, जब तक आप खा रहे हो तब तक पीरियड्स टाइम पे आएंगे। बट हैव यू एवर वंडर्ड कि जो हम ओरल हॉर्मोन्स खा रहे हैं वो हमारे एक्चुअल नेचुरल हॉर्मोन्स को कितना और कंफ्यूज, कितना हेवायर कर देंगे अंदर से? तो साइड इफेक्ट्स होना नेचुरल है। और जब आप छोड़ोगे तो देर इज अ क्वाइट अ पॉसिबल चांस कि चीजें आपकी और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएं। बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं, वेट चेंजेस होते हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं, इमोशनल इश्यूज हो सकते हैं, नोजिया हो सकता है, गट इश्यूज हो सकते हैं। बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं इन डिजीजेस के, सॉरी, इन मेडिसिन के, upon taking such medications. So we have to be very, very, very careful. And And yes, like if it can be reversed with pills, I think ये तो मतलब this is the golden question. yes, I must say, without all the external या artificial hormonal pills के बिना PCOS की condition हम reverse, is not the exact word I would use, but yes, a lot of things can be brought back to normalcy डिपेंडिंग ऑन योर क्रॉनिसिटी। जैसे मैंने पहले बोला, कितना पुराना डिजीज है, कितनी उसने जड़ें बना ली हैं आपके शरीर में, आपकी क्या प्रकृति है, आयुर्वेदा के हिसाब से आपका बॉडी टाइप अंडरस्टैंड करके हम आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट, वेट मैनेजमेंट, डाइट, न्यूट्रिशन, आपका लाइफस्टाइल में अगर मैं बात करूं तो आपकी एक्सरसाइज, वर्कआउट, स्लीप, इन सब पे काम करके वी गिव यू आयुर्वेदिक मेडिसिनल सपोर्ट या आयुर्वेदिक सपोर्ट, जिसमें हर्बल रेमेडीज होंगी और ऐसी कुछ आयुर्वेदिक क्लासिक दवाइयां होंगी जिनके साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। बेसिस ऑल दीज, यस, इट इज मैनेजेबल टू क्वाइट एन एक्सटेंड, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें मिले हैं, which we will be talking about going forward in our slides. And that is why I think जैसे हम लाइका में करते हैं ना, that kind of thing, it's like a holistic plan that we give कि cycle synced हो सब कुछ, that we can manage beautifully just by knowing when to give what. Exactly. And as I told you initially, जैसे हम बात कर रहे थे साइकिल्स की, साइकिल्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच में आपका साइकिल सिंक्ड भी होता है, आयुर्वेदा बॉडी टाइप डायग्नोसिस भी होता है, बहुत सारी चीजें होती है। यू विल बी अमेज्ड टू नो ऑल दीज थिंग्स। Yeah. I think this also has been answered. Is my acne and hair loss caused by PCOS? Yes, Yes, absolutely. yes. Well, a very, very important question. Can I get pregnant if I have PCOS? Yes, many women with PCOS have conceived naturally. क्योंकि with and without fertility treatments also, because PCOS का मतलब ये नहीं है कि आप fertile नहीं हैं या problems हैं, hormonal variations हैं, they can be tackled and they can be worked upon. Right.
So there's nothing to worry in such cases. However, जितनी भी young women हैं, जो भी married या unmarried, जो future में plan करना चाहते हैं to have a baby, just address your problem as soon as you can, and that is the right way or the right approach towards it. Right. So in fact, ये जो आप लोग slide पे देख रहे हैं, yes, we have given like a very small, it's like the tip, not even the tip of the iceberg, like one dot on the tip, कि मतलब कितनी सारी चीजें हम कर सकते हैं to manage PCOS. So it's just giving you a broader category कि अगर हम seeds के बारे में बात करते हैं तो we basically mean food, कि हम food कैसे how to manage use कर रहे हैं या chemicals है. Then of course our exercise regime, stress and different kind of dairy products. So it's not like hard and fast rule कि मतलब एकदम यही करने से सब कुछ हो जाएगा. It's not like. So you will come to know very soon, going forward. And what happens if I leave PCOS untreated? Thing Dr. Ruchi already told you कि मतलब कितना कुछ हो सकता है, the lifestyle thing. Yeah, Dr. Ruchi, please go ahead. PCOS का जैसे मैंने बोला लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस तो बहुत सारे हैं. इट कैन बिकॉज मैंने बोला अंडरलाइन कॉज इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो सबसे पहले तो टाइप 2 डायबिटीज के रिस्क हो जाते हैं, हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, एंड गोइंग फॉरवर्ड इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं अगर पीसीओडी में कन्वर्ट हो गया, फिर उसके बाद पीसीओडी भी अनट्रीटेड रहा, आपने बिल्कुल कोई इफ यू हैव कंप्लीटली irregular cycles, तो वहां पे ओव्यूलेशन एनाबुलेशन का कंडीशन बन गया, तो वहां जाके हो सकता है टू सम एक्सटेंट एंडोमेट्रियल कैंसर तक की प्रॉब्लम भी कई क्लाइंट्स में डिटेक्ट हुई है. सो दैट इज व्हाई दिस अवेयरनेस इज what Laiqa is trying to bring about, कि पहले तो आप अवेयर हो जाइए एंड अंडरस्टैंड करिए लाइफस्टाइल डिजीज है, आसानी से मैनेज हो सकता है. Only you need to tweak a little and understand the basics of it, which we are here for. Absolutely. And yes, it is reversible. In fact, she is one of our prime clients, and Radhika's story is so amazing. When she came, she's been struggling with PCOS for years and thyroid issues and period pains. मतलब वो एकदम रोती थी, phone पर कि इतना दर्द होता है. But just following to the T the kind of regime that Laiqa prescribed her, she lost almost 15 to 20 kgs. You can see it, it's right there. So matlab, there is nothing to hide. This is what she was and what she, even if, it's not just the weight gain, it's about, when you manage the fat percentage in your body, and that helps in so many things, the metabolic metabolism हमारा कितना improve हो जाता है, when we are careful about so many different things. And you see the glow on her face, you can make out her skin looks so different. Like, I have also, like, मैंने भी एक strict regimen follow किया, and I was able to manage so many different problems that I was facing. And this is where, as Dr. Ruchi said, जो हमारा Laiqa का जो approach है, we call it that 1-2-3 approach, जहाँ पे first for anything, हमें अगर आपको कुछ help करना है, पहले हम समझे कि problem कहाँ है. So identification, exactly what is happening. And वो identification ऐसा नहीं कि बस हम ऐसे ही आएंगे और कुछ बोल के चले जाएंगे पूछ के, नहीं. We have a proper wellness quotient. It's called an LQ, or a lifestyle quotient, and a menstrual wellness quotient, MWQ, जहाँ पे there are hundreds of questions which are asked. You have to fill those answers, honestly सारे answers देने, and based on whatever answers you've given, the data we collect, उसके ऊपर हम बेस करते हैं, अपना एक प्लान बनाते हैं, जहाँ पे as in the previous slide you saw the cycle synced diet plan हुआ, फिटनेस रेजिमेंट हुआ, किस तरीके की एक्सरसाइजेस करनी चाहिए ड्यूरिंग पीरियड्स, और व्हेन यू आर नॉट हैविंग पीरियड्स, डिफरेंट फेजेस ऑफ द साइकिल में अलग अलग टाइप की एक्सरसाइज. इट्स नहीं कि अगर हम एक चीज कर रहे हैं तो हम एक ही चीज करे जा रहे हैं पूरा महीना, नॉट लाइक दैट. एंड एनी काइंड ऑफ एक्स्ट्रा आयुर्वेदिक न्यूट्रास्यूटिकल और प्रोडक्ट असिस्टेंस दैट you may need. So it's a holistic plan, taking care of your stress. That's also important. Day to day stress हमारा, क्योंकि हम वापस स्ट्रेस ले लेते हैं, इट्स लाइक वी गेट इनटू अ विशियस साइकिल, कि हमारी हेल्थ खराब हो रही है, फिर हम स्ट्रेस लेते हैं और उससे और हेल्थ खराब हो जाती है. सो मेकिंग श्योर दैट इवन योर रेगुलर लाइफस्टाइल इज मैनेज्ड, और बेस्ड ऑन ऑल दिस,
proper tracking. It's not कि हमने आपको कुछ बोल दिया और फिर आप जाइए, ऐसा नहीं है. You'll be part of a community. You'll be added to a WhatsApp group. You'll have all the coaches, health coach, fitness coach, doctors, nutritionists. Everyone is going to be on the group. जहां पे you can ask questions day to day. जो भी आपको डाउट हो रहा है, चाहे खाने को लेकर है, एक्सरसाइज को लेकर है, anything and everything. Right? And not only that, not only technical help or clinical help, but also imagine the kind of emotional and mental support that you give, because you're not going to be the only one. There's a your whole community there. There are so many women, other women who are going through the same phase, they all are in that journey. So when you know that you have your fellow travelers, so, the journey becomes so much more fun, so much more motivating. So all of it together, this is what Laiqa 1, 2, and 3 that we call, 1, 2, 3 plan. And again, the engagement doesn't stop once your plan is over or आपने अपना goal achieve कर लिया. ऐसा नहीं है. There are so many things that are going to happen. You will be part of workshops. You will be part of हम लोग lifestyle tips देते रहेंगे. Something new has come up, we share, or so many things. It's endless. I can't even sit to tell you all of it. And this is just a very small, बहुत ही छोटा सा एक स्क्रीनशॉट हमने लिया है कि जैसे हमारा जो वेलनेस क्वोशेंट है उसमें किस तरह से क्वेश्चंस होते हैं. Simple things like how often do you feel unrecognized, unrewarded in your place? Your emotional and mental health is equally important. As I said, everything is interconnected. Your mind, body, spirit. And, any kind of behavioral changes you are seeing, any kind of, stress at work, it could be anything. So ये तो बहुत ही कम question, ऐसे 100 questions और होंगे. So after this, as I said, 1, 2, 3 वाला step. And this is where now we come to a big surprise कि अब हम ये करेंगे क्या, ये सारे 1, 2, 3 step लेकर आगे कैसे बढ़ना है. आगे इसलिए बढ़ना है क्योंकि first of all आप लोगों ने ये commitment दिया है खुद को. It's not about committing to us. It's not about committing to Deepika and Dr. Ruchi and Laiqa. But it's committing to yourself that you have to be the better version of yourself going forward. हर दिन I'm going to be better. Suddenly ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने अगर 10 किलो वेट लूज कर लिया है तो बढ़िया. It's not that. It's not just about weight loss. हम healthy कैसा feel कर रहे हैं अंदर. And this is why we are getting this program for all of you, which is called the Hormone Balance Builder Program, which is a proper 90-day program. It's called the PCOS challenge, 90-day PCOS challenge, where you have a targeted plan focused on nurturing and building hormone balance through small, but consistent lifestyle adjustments, right? And in this, what will you get? As I mentioned, lifestyle and menstrual wellness assessment, Ayurvedic assessment, mind-body analysis, dietitian consultation, Ayurveda doctor. I mean, imagine the things that you're getting. It's like a whole entourage, right? And so many. So, and plus you're getting so much of emotional and mental support of all this. And this will ultimately help you achieve better health, which has all these factored in. Overall menstrual health हुआ, elevated energy, you'll feel more energetic, craving reduce हो जाती है, weight management, we all want to lose weight, we all want to, wear our best clothes and so many things, right? We all have our goals. So yes, in inch loss, better skin and hair, we are struggling every other day with that. सिर्फ hair products और skin products use करके तो नहीं होगा ना. Health comes inside out, outside in नहीं होता है. अंदर से हेल्दी होंगे तो ऑटोमेटिकली हमें शायद जरूरत भी ना पड़े उतने हेयर प्रोडक्ट्स और स्किन केयर प्रोडक्ट्स के, इफ आर इंटरनली वी आर हेल्दी. सो ऑल ऑफ दिस कैन बी अचीव्ड. एंड हाउ दिस हार्मोन बैलेंस बिल्डर प्रोग्राम, व्हिच इज अ 3-month program, 90 days, it's only for 7,800. It's actually a steal. Trust me, girls. How much do we spend every month on probably going out and eating and maybe partying या movie देख ली? like 2,000 to 3,000 rupees तो हम ऐसे ही खर्चे कर लेते हैं. So just imagine, it's just what, 2,800 something, 2,600 rupees, yeah, per month. एक महीना, just 2,600 you're giving, and you're getting all of that. Doctor, Ayurvedic doctor हुआ, health and fitness coach हुआ, nutritionist हुआ, everything.
everything you're getting just for 2,600. It's an investment. And remember, I'm sure the ladies who have mentioned to me, and I'm sure others who have not yet mentioned कि आप struggle कर रहे हैं PCOS का, the kind of kharcha you have on medications and so many things, doctor appointment, this, that. अगर हम actually बैठ के उसको calculate करें, it's going to come in many more thousands. And agar, God forbid, if something goes really bad and you have to probably seek surgery or, advanced kind of, health support, lakhs mein kharche ho jate hain. So would you rather save on those lakhs of rupees? And it's not just the rupees. Imagine the mental stress and the kind of situation you would be in. You would not like it. It's a very unpleasant situation to be in bad health condition. So would you rather spend those lakhs later or spend just 2,600 now in a month and total 7,800? So ये कुछ भी नहीं है, and it's actually at a discount because हम workshop जब करते हैं, हम ये सिर्फ इस workshop के लिए ही applicable है. Once this is over, it's going to go back to 12,000. So 7,800. Trust me, ladies, come on. You have the QR code here. Just book it. You have to pay only 1,000 rupees to block your seat. You're going to, our team is going to get in touch with you. Sub process आपको समझ में आएगा, and trust me, it's going to be the best investment, and the best return on investment will be, imagine, a better you. I'm sure you all want to be a better version of yourself. How many of you want to be that? Come on, girls, go for it. I think this is the best thing that you can gift yourself. सोचो कि दिवाली gift है. And don't worry about how kaise hoga, kitna hoga. We all are there, as I said, because there's so many hands which are going to hold you through this. Come on. I want all of you to register, all of you to come on board. And trust me, it's going to be a great journey towards health. We also have one option where, we are calling it double dhamaka, Diwali dhamaka, where we are giving a hormone detox reset. And that is a 1-month plan, which is for 3,000 rupees. So if you want to go for that, we also have a 1-month plan, which is for 3,000 rupees. No, Ayushi, you have to just book your, slot for, just pay 1,000 rupees. Yeah, I'll show you. You just pay 1,000 rupees and block your seat. You can just scan this, and later on the team will get in touch with you, and how the rest of the payment will go forward, वो आपको team बता देगा. So all at once अभी नहीं pay करना है आपको. Come on, Ayushi, go for it. Achal, Aparna, Chetna, Maliha, Priya, Rajni, Sanya, Uma. Commit to health. Commit to your health today. You would not regret it. You would pat your back after 3 months. Okay, Rajni, can I confirm till? Okay, yes, you can, but अगर आप अभी आप book कर दोगे तो आपको 7,800 में मिलेगा. कल आप करेंगे तो फिर वो वापस 12,000 हो जाएगा. So I'm sure you would not want to, it's like 4,200 extra. So why not just book your slot? It's just 1,000 rupees. Book your slot, and उसके बाद आप टीम से बात करिए. आप देखिए आप, and it's not going to start like कल से ही आपका सब कुछ हो जाएगा. We are going to give you good amount of time. This is going to start post Diwali. So okay, great. All right. Thank you, team. So Rajni, don't worry. Yes, it is confirmed. The team has confirmed that you can take time till tomorrow. So great. Awesome. Come on board, Rajni. You can pay till tomorrow, 12. Thank you, team. Thank you for telling me. What about others? Welcome, Rajni, and we are really looking forward to see you. मुझे वो WhatsApp group में ना रजनी का नाम देखना है.
Come on, rest of you, Aparna, Chetna, Priya, Sanya, Achal, go for it. Any other questions you have? Please, please, please do. We're going to be around for another 5 minutes. Dr. Ruchi is here. If you have any questions, या इन सब चीजों में कुछ भी अगर डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, anything that is stopping you from taking a decision, please tell us. We are here to help you. और एक चीज जो हम आपको गारंटी जरूर देते हैं, हम आपको ये गारंटी देते हैं कि आपकी हेल्थ अच्छी होगी। उसके साथ साथ हम आपको ये भी गारंटी दे रहे हैं कि अगर आपको रिजल्ट नहीं मिले इन 15 days, वी गिव यू मनी बैक गारंटी डेफिनेटली। बट ट्रस्ट मी, जरूरत नहीं पड़ेगी। इन 15 days you will see results. That is, yeah, if you are following everything to the T. जो बोला गया, अगर प्रॉपर गुड गर्ल्स की तरह फॉलो करेंगे, you will get results. You will not reach a stage where you would like to. Oh, awesome, Pallavi. Awesome. Like we did 90-day one. Oh, lovely. So, Pallavi, you have already booked your slot. Awesome. Claps, 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 claps for all these lovely women who are coming on board. Oh, yes, it's always nice to take the challenge, na? Yeah. हमेशा मन गया बस अपने बॉडी को ही हम चैलेंज करते रहें। Lovely, lovely, lovely. So come on, girls. This is the QR code. Scan and you will be part of the Laiqa team. Any other questions? Anyone? See, we have Pallavi, we have Rajni joining us by tomorrow. What about others? Come on. This is so motivating, when you see other women taking care of their health. Would you also not feel like, nahi, mujhe bhi karna hai? You remember the health quotient that you wrote in the beginning? वो health quotient को हमें बढ़ाना है ना? 2 का 3, 3 का 4, 4 का 6, 8 and 10. We have to be at 9 and 10. When to start the whole process? After, before Diwali? Yes, the team is going to get in touch with you, Rajni. वो आपको बताएंगे. So वो दिवाली के बाद ही शुरू होगा. So it's great, Priya. Awesome, Priya. Lovely. Welcome to the Like Up community. It will be after Diwali. Mostly it's going to be 7th and the team is going to confirm to you the date. Mostly 7th November ke baad hoga shuru. But still, you will get the entire details once you register yourself. और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपको QR कोड स्कैन करने में प्रॉब्लम है, so you can even book your session. Just WhatsApp करिए this number that has been given to you by the Laiqa Wellness team. We are also giving you a free consultation with an expert doctor. So you can even get onto a call and just just learn about what are the different steps that you can take going forward. तो आपको personalized advice मिलेगा उनसे. Yes, this is the number. The other numbers 83181 201962 and the 85 number. Go for it, girls. So just before we wind up, if there are any other questions, any doubts, shoot, just write it to us. Or if you want to unmute yourself and talk, you can.
All right, since we don't have any other questions, any other doubts, right? So it's time to wind up, but you still have this offer running. I hope you all have copied the WhatsApp number. You can call and book a free personalized session to know exactly how to go forward. All right. It was great having all of you wonderful women on board. Thank you, Dr. Ruchi, for the immense knowledge, all the information that you've given us, and the kind of help and motivation that is much required by we women here. Thank you, Laiqa team. Deepika. Thank you so much, everyone. Good night. Have a safe Diwali. Yeah. Stay healthy, stay happy. Bye.